हैदराबाद में दोपहर से अचानक गरज व चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम भी अबर आलूद देखा गया। महकमा मौसमियात ने आज यानी जुमेरात के अलावा जुम्मा और हफ्ते को भी तेज हवाएं चलने का गरज चमक के साथ बारिश होने की पेश क़ियासी की है। उसी के पेश नजर शहर में येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। आज दोपहर के बाद हैदराबाद में आसमान पर बादल छा गए और गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। आसमान पर बादल छाने के साथ ही गरज के साथ बाज़ मुकामात पर बारिश की भी इत्तलात मौसूल हुई। वहीं तेलंगाना के कई अजला चेवरला, विकाराबाद, शमशाबाद, हैदराबाद व दीगर इलाकों में तेज बारिश जारी है। At present, the weather indicates that mainly easterlies and southeasterlies prevail over the Telangana state. During next 2 days, Telangana is likely to have dry weather conditions, and thereafter rainfall along with thunderstorm activity is likely to occur. So from 16th onwards, 15th afternoon onwards, there is likely chance of rainfall in 1 or 2 places over Telangana and accompanied with thunderstorm. From 16th afternoon and 17th afternoon, there is very likely of rainfall, light to moderate and thunderstorm activity accompanied with hailstorm, at times gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour in north districts and northwest districts of Telangana. At times on 17th afternoon, there is very likely of increase of this thunderstorm activity along with rain, and heavy rainfall is likely to occur at 1 or 2 places in the districts of Nizamabad, Nirmal, Jagityal, Rajanna Sircilla, Peddapalli, Karimnagar, and thunderstorm is likely to occur in north, northwest adjoining districts and east and northeast districts of Telangana. And thereafter, outlook shows that there is likely chance of this thunderstorm and rainfall to continue during next 2 to 3 days. Hyderabad city is likely to have dry conditions during next 2 days, and thereafter there is slightly increase in rainfall and thunderstorm activity.